मेघालय के विपक्ष के नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बिजली संकट का एकमात्र समाधान यह है कि मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे मेघालय को उबारने में विफलता का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता डॉक्टर मुकुल संगमा कहा कि इस गड़बड़ी के लिए केवल एक सुधार हो सकता है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और बिजली मंत्री जेम्स संगमा को बाहर फेंकना, और कुछ नहीं। दूसरा कोई समाधान नहीं होगा। संगमा ने कहा, इस गड़बड़ी के लिए सीएम और ऊर्जा मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, वे इसे हल नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मंशा और प्राथमिकताएं अलग हैं। वे इस झंझट को सुलझाने के लिए इच्छुक ही नहीं हैं। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यदि मीसीएल मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड के तहत ये विशेष इकाइयां कुप्रबंधन, अक्षमता और कुछ के लालच के कारण अपंग हैं, तो राज्य का भविष्य विनाशकारी होने वाला है। संगमा ने कहा, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों द्वारा उठाए गए शिकायतों और चिंताओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि ये सामान्य कथन नहीं है जो किसी पर उंगली उठाने या सिर्फ राजनीति खेलने के लिए व्यक्त किए गए हैं। See, it's a dangerous trend. I have spoken about power sector for a long time, since 2006-2007. People have to understand, how important this power sector is. It's a fear. If these particular entities under MECL is crippled due to mismanagement, due to incompetence and due to greed, I repeat, due to mismanagement, due to incompetence and due to greed of few, the state is going to have a disastrous future. I have seen people writing to the letter to the editors. I have seen lots of narrative being circulated in social media. These are not just general narrative or conversation just to point a finger at anybody just for the sake of playing politics. But these are reflection of the concern about the gravity of the situation. That is what the state is in. And unless it is corrected, I am saying that the state will have disastrous future. And what is the correction? The only correction is to throw out the chief minister and to throw out to throw out the power minister. Nothing else. There will be no solution. They will not solve it because their intentions are different. Their priorities are different. So the priority is very important. I have said it in the house. Their priorities are different. They are not interested to solve this mess. And they are actually being responsible for creating the mess. You just look at recently how many officers were shifted again overnight. Somebody was asked to resign. What are those indicators? These are tip of iceberg. Who can remove an officer other than chief minister from the board of directors? People have to read between the lines. The gravity of the situation is so much that I am telling you my state is going to have a disastrous future. And I'm concerned. I want everyone to be concerned. And these can be solved only when you throw out the chief minister and throw the minister concerned from